इसी के साथ साथ मैं आपसे एक नया सवाल पूछना चाहूँगा। विमेन इन स्पोर्ट्स, विमेन इन क्रिकेट पर्टिकुलरली, जैसे बात तो अभी बहुत हो रही है विमेन क्रिकेट को इम्प्रूव करने की, पर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रूट लेवल और डेवलपमेंट लेवल के ऊपर विमेन्स का पार्टिसिपेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं इन क्लब्स एंड इन अकेडमीज? उसके लिए इकोसिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए? कोचेस को कि क्या सजेशंस है जो वो देना चाहते हैं? I think I'll say you should provide them more initiatives, more career opportunities, so that women also feel like in cricket, if you're doing well, you are assured of job. Right. Some financial company will help you. Same thing goes with the women cricket, and women cricket is also doing very well. So, initiative is very important in women cricket, and infrastructure. Right. That is the end of the day. You need good infrastructure, good pitches, good nets, atmosphere, which I have told many times before. So, to improve women's cricket, it has to be very good tournament. The BCCI is trying their best, and they are doing also very good to involve in them big tournaments. Then only improve. The more matches you play, the more you improve. It is a basic thing. Right. If you don't, you say कि यार I do 200 days in a year practice, but I play 2 matches. Right. It's no good. Because both are equally important to play matches and practice are, because then only you know your strength and weakness if you play matches. Ji. Only through the games, coach can identify, yeah, I think he's struggling there, he's whatever. So it is very important, the matches, the exposure. The women should be provided more stage to perform. More tournament, more exposure. If you don't have a stage, where do you showcase your talent? जी. If you have more tournament, you can showcase your talent. जी, थैंक यू सो मच सर इस जवाब के लिए। आई एम श्योर बहुत सारी जो वुमेन क्रिकेटर और जूनियर्स इस शो को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा इनपुट मिलेगा। सर इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर जैसे वी से स्पेशली इन इंडिया इट इज़ अ गेम ऑफ मासेस, जनता का खेल है। अब इसके अंदर सर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी होते हैं। उनको उनकी क्रिकेट को सर हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? क्या क्या आपने भी बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेन किया होगा, कोच किया होगा, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स की वजह से वो रह जाते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। उसके लिए सर आपके क्या सजेशंस हैं? वो चीज़ को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं इस लेवल पे? यार उस चीज को ओवरकम करने के लिए देयर इज नो एग्जैक्ट मेथड, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई ऐसी चीज तो है नहीं। क्या कर सकते हो, दोज हु आर फ्रॉम वीक ग्राउंड or very strong ground, whatever the reasons. It's all depend upon the facilities. When I was growing and I was playing, there was only National Stadium NIS. Now you go every 100 meter, you find the academy. Right. So things have become easy, and even the quantity has also become, the number of students. Right. But depend the quantity, if you compare quality, right, you will find very less. Right. You see, it's very difficult to identify, okay. But if you are saying that youngsters are coming, it's all within you. It's all within you, ki bhai, okay, I have to play cricket and I want to play good cricket. So it should be within you. So nobody can motivate you. It's all saying. लोग बोलते हैं coach हो. End of the day, what is in you? जी. How you take your stride forward. You should know what is important, what is good, what is bad, what is wrong, what is right for you. So that is called maturity.
which very few boys have had. Right. They come to you and you can see, yeah, yes, he's showing sign of a good player, becoming a good player. जी So that is very important. सर, इसी के साथ में एक सवाल और लेना चाहूँगा। जैसे आपने इंग्लैंड में भी कोचिंग करी है, आपने इंडिया में भी करी है, तो सर अलग अलग जो एक पेडिग्री है कोचिंग की, जैसे आईसीसी के जो कोचिंग की जो पेडिग्री है वो हमको रेशियो बताता है कि 1:6 में आपको ट्रेनिंग करनी है, कि एक कोच पे 6 बच्चे होने चाहिए, पर ये रियलिटी से बहुत दूर है। जब हम इंडिया में आते हैं तो एक कोच के ऊपर 100 बच्चे होंगे, 200 बच्चे होंगे। ट्रू। तो जैसे आपने इंग्लैंड में करी होगी तो वहाँ पे तो मैं अगर नंबर्स की बात करूँगा, द टर्न आउट इन अ डे, ऑब्वियसली जो सेशन प्लानिंग है वो बहुत डिफरेंट है। व्हेन यू ट्रेनिंग 5 और 10 स्टूडेंट्स वर्सेस इंडिया में व्हेन यू ट्रेनिंग 100 स्टूडेंट्स, तो ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? स्पेशली मैं यंग कोचेस के लिए पूछ रहा हूँ जो अभी निकल के आ रहे हैं एनसीए से, एनआईएस से, आईसीसी अकेडमी से। तो आपके अनुभव से सर क्या इसका एक बेस्ट तरीका है? तो हर एक का ना एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 100 बच्चे पे एक कोच, और फिर आपने कंपेयर किया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। इफ स्टूडेंट कम्स टू मी, इसे कि सर आई पे यू 20 पाउंड्स, करेक्ट माई लेग स्टम्प बैटिंग, सी then his coach will also come with the student in England. He said, just see him, I think he has a problem. And it is very easy to one-to-one. Right. Because 2 hours you are giving one-to-one, no, your wrist is not in a good position or your leg is not in a good position. So, what happens? They learn. Right. You're throwing 200 balls to one person and saying ki, okay, you have to be this, your wrist position, your elbow should be high, and so it becomes easy. But in India there are so many bachche in a queue waiting for their batting. The coach also feels when he look at the long queue, okay, chal theek hai, next. So this is the difference. All are talented. I'm telling you, Vishu, all are talented. It's just a saying. You know, कई होते ना naughty type, जी, they are very talented, but coach उनको neglect कर देते हैं कि यार ये ऐसा ही है, बोलता है ज़्यादा, discipline. But it's your job to make him feel good. आप importance ही नहीं दोगे किसी को तो वो आपको क्यों देगा? जी. So a coach doesn't mean that you're the boss. You're the boss on the field, and you're the boss to get the best out of each and every one. That is your job, and it depends upon your method कि how you take out the best. Right. आपके अपने भी तो as a coach method होना चाहिए ना कि you can convince the boy, then he feels happy. Yes, he feel confident talking to you. Right. थैंक यू सो मच सर इस आंसर के लिए। आई एम श्योर बहुत सारे दर्शक को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं सर इसके साथ जो अगला सवाल लेना चाहता हूँ, मैं एक पूरा अगर डेवलपमेंट साइकिल देखता हूँ प्लेयर का, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट्स टिल रिप्रेजेंटिंग प्रोफेशनली, स्टेट हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। सर एक जो गैप है अप्रोच के अंदर, जैसे अगर हम क्लब लेवल पे खेल रहे हैं, नीचे खेल रहे हैं, कोई भी प्लेयर नेचुरली उतनी प्रिपरेशन नहीं करता मैच में जाने से पहले। कई बार मैचेस भी टाइम पे नहीं शुरू होते, उसको नहीं पता विकेट क्या है, उसको सामने वाले ओपोनेंट नहीं पता। लेकिन आई एम श्योर आपने इतने साल फर्स्ट क्लास खेला है, बहुत होमवर्क जाता है रिगार्डिंग ग्राउंड्स, रिगार्डिंग प्लेयर्स, रिगार्डिंग कंडीशंस, एंड प्लेयर्स आर वेरी सीरियस। तो सर उस तरह का एटीट्यूड और उस तरह की नर्चरिंग क्या बचपन से ही डाली जा सकती है बच्चों के अंदर? क्योंकि वो मुझे लगता है थोड़ा सा एक गैप है, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। तो उसके लिए सर आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? My suggestion will be to remove the gap. How you remove the gap? Gap means student is unable to talk to you comfortably. His mind, his overall personality, because he is scared of the coach. Right. So, to reduce this gap, coach has to be very particular about this.
about shouting, about not treating so well to the student. These are the main ingredients of the coaching institute, which is very important. You see, if the child is at home, 3 बजते ही वो कहे यार मुझे कोचिंग में जाना नहीं, I have to go. That means he is happy and he is comfortable with you. Right. But the moment he hesitant कि नहीं यार वहाँ डांटते हैं, भगाते हैं, and then it's of no use. Right. The moment you leave your home, you leave your home for coaching with the purpose. कि coach has said कि I'll do this. Today I will prove my batting. With a purpose. It's very, very important. If you leave your home without purpose and for the sake of it, कि चल यार जाना है, चलो खड़े हो जाना है, बैटिंग करेंगे, नेट में मारेंगे. Right. So that doesn't solve. Your gap will remain the same. जी. As I told you before, as a coach, you should feel after 2 months watching a particular student, you should say, yes, he's looking better, he's improved. Or rather, he's improving. Which is very important. If you see the same thing going, you should also feel as a coach, yeah, something is wrong with me. The moment you feel this, then the purpose is solved. Because most of the coaches, they don't take anything on them. Right. They always blame Right. parents or the student. You should be equally responsible because you are a professional man. Right. You are here to teach them. Right. So your accountability should be counted. He has not improved anything without any excuse. Right. तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, प्रोफेशनल Of course, रिलेशन yes, जरूरी है very important. गेम के अंदर. Otherwise, what is the fun? Right. I'm waiting for the first to get money and go home. Right. Exactly. I should be accountable. Bhai. What have you done in last 6 months? Right. सर जैसे आपने एक प्रोफेशनलिज्म की बात करी है और आप दिल्ली कैपिटल से भी जुड़े हुए हैं, आपका क्या मानना है कि अगर इस लेवल पे, लोकल लेवल पे किसी भी स्टेट के अंदर फ्रेंचाइजी क्रिकेट आता है तो क्या उससे वो प्रोफेशनलिज्म इम्प्रूव होगा? जैसे चेन्नई प्रीमियर लीग है और इस तरह के कई लीग्स हैं जो एक आपके स्टेट लेवल पे आती हैं और वहाँ से आपकी प्लेयर्स की स्काउटिंग भी होती है, आपको प्लेयर्स भी मिलते हैं. देयर इज अ न्यू इकोसिस्टम क्रिएटेड. Will that help to create a parallel system or a system of new scouting in the game? Of course, absolutely. Once you are provided platform and live on TV, you get motivated because then your name spread also if you do well. जी. If you perform well, people will know that yes, he is the player. So that is very important to provide stage, as I told you before. And it all depends on the individual. Right. There are so many cricketers, their temperament is different, their technique is different. They take the game in a different way. The way you take, I take, is a different. But end of the day, as I told you before, last column counts. Right. It doesn't matter what is your technique, what is your do this. If you are getting 100, 80, 90, you are improved, you are a good player. Then you come into a larger picture by performing. Then another higher stage. So that's how you improve. You get higher stage when you perform. Otherwise you don't get. Right. To reach on the top of the table, you have to perform very well. Right. It's a very simple method. There is no logic behind. You perform well, you get 1 grade up. Do well there, 1 grade up. So that is how it is very important that if you want to be a professional, first you have to be mentally professional. Right. From your individual capacity rather. Right. You should be mentally strong, mentally sportsman.
Right. Yes, I am a sportsman. I'll do it. Because as you talk about my experience, I have seen the big stars. They are always very cool and calm. They get 200 runs, no expression change. Say, pad up, bat, get another 80. So it shows they're comfortable. Because inside they know कि I'll get without speaking. राइट. तो सर जैसे आपने बड़े प्लेयर्स की बात करी है, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर टेक ऑन जीनियस वर्सेस हार्डवर्क. अब जैसे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सुनील गावस्कर, क्या सर सबसे पहले इस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या वो गॉड गिफ्टेड होते हैं? और दूसरा, अगर आपको लगता है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं तो उसमें मतलब हार्डवर्क को आप कितना वेटेज देंगे उस पूरे? See again, it's a tough question you have asked me. If you talk about Gavaskar, Sachin, they are not born. They are born genius. Although they were very hard working, I know them, very hard working, but still, see how much you practice, whatever you do, you cannot become Lata Mangeshkar. Right. It is born talent. So Sachin and Sunil Gavaskar or G.R. Vishwanath, you talk about any legend, they are born. But at the same time, they give importance to practice, hard work. They sweat out. Every day they will sweat out. Not a single day will go. Because I have seen so many during Ranji Trophy or matches washed out. Great big players, they will doing running in the rain. Right. Youngster will pack their bag. Ki okay, aaj. So this is the difference. You see, Madan Lal will make sure 365 days he will run, irrespective of heat, cold, whatever. But he will not disturb his schedule, Right. daily schedule. Right. So these things look small, but in the end it pays heavily. Right. That's make the difference. That is the difference. You see, margin of victory and defeat. Sometimes it's only 1 run, Right. 2 run, Very small. very small. So they say bad luck, lost by 2 runs only. No, it's not a bad luck. You are not good enough. Right. If practically you see, you are not good enough here. You got out 99. Only 1 run could have changed 99 into 100 essentially. Right. So it's your concentration, your temperament, your body even counts. Right. Language of your body and mind, how it is working. Right. सर इसी के साथ मैं अपने लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ आपसे. सबसे पहला सवाल सर ये है, यूर एन ओल्ड स्कूल क्रिकेटर, आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया गेम को बदलते हुए. आप मुझे सर ये बताइए कि एक ये जो डिबेट है लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट वर्सेस शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट, अभी जो है हम देख रहे हैं T20s आ रहे हैं, T10s आ रहे हैं, शॉर्टर फॉर्मेट हर जगह आ रहा है, ICC नेशंस में भी आ रहा है. तो क्या शॉर्ट आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है आप देख रहे हैं क्रिकेट का, उसमें क्या शॉर्टर फॉर्मेट ही ज्यादा होने वाला है या टेस्ट क्रिकेट अपनी जगह बनाए रखेगा? As I feel, personally feel and very strongly feel, the short format will gain more popularity because it has lot of excitement, Right. quick result, Right. you know, and people enjoy watching. And duration of the game is 2 to 3 hours. People enjoy it and it has a great future also. But at the same time, Test cricket cannot die. It will never die. Because if I have to try Vishu, I'll try him in a Test match. Right. If he can play 200 ball and get 100 runs, that means you have a temperament. You have the technique. You have the power of staying on the pitch, which is very important. If you know youngster learn, they should have that grit, that technique to stay on the pitch. The longer you stay on the pitch,
The more runs you get, it is very simple method. जी. If you just go and come 10, 25. So, end of the day, short format has a great future, no doubt, because it's less time consuming and more exciting. But whereas test cricket is a class, test means test of your temperament, test of your technique. जी. How longer you can stay on the pitch. The more longer you stay on the pitch, more runs you get. So it has its own beauty. जी. जी. थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा और इलाबोरेट आंसर. इसी के साथ सर मैं रैप अप करता हूँ और आपसे एक लास्ट सवाल पूछता हूँ. आपके जो इतना लंबा वर्षों का अनुभव और एक्सपीरियंस रहा है क्रिकेट का, इफ यू हैव टू सम इट अप, क्रिकेट आपके लिए दिल से क्या है? आप क्या बोलना चाहेंगे? क्रिकेट आपके लिए दिल से क्या है, एक? और दूसरा, जाते जाते जो अपकमिंग यंगस्टर्स है, जो आने वाली जनरेशन है, जो इंडिया का क्रिकेट संभालेगी, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मेरे लिए क्रिकेट क्या है? मेरे लिए क्रिकेट ही सभी है. एवरीथिंग आई ओ माई सेल्फ एंड माई एवरी अचीवमेंट, वट एवर आई हैव अर्न. That is why I am sitting in front of you today. If I have done nothing, who will recognize me? Because I have done something, because I am getting recognition, and you get recognition only when you perform. And as far as youngsters are concerned, they have to make sure, go to practice with a purpose. Okay, this thing, this is not only the duty of the coach to identify this problem, it is also the student should know, right, that I am struggling here. Right. That will be more appropriate. Right. If he can understand, यहाँ मेरा दिक्कत है थोड़ा, जी, I should improve this. So it is very important, and future of youngsters are very, very bright because they have now so many platforms जी, to showcase their talent. right, In our time, there was only Ranji Trophy. right. So, आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज के यंगस्टर्स, and because you are involved with the academy also. Most of the students, those who doesn't get chance, they say कि it's a politics. Whereas I feel there is no politics these days. When you're electronic or this, every match is telecast. So if you perform, you can show. Yeah. जी. Thank you so much sir उस My आंसर के लिए. pleasure. And it has been a great talking to you. Thank you very much, It's Vishu. been a great interview. Thank And you. दोस्तों, मैं इस वन लाइनर के साथ आपको छोड़ूंगा, जो इनका एक सेंट्रल मैसेज है कि कम टू प्रैक्टिस विद अ पर्पस. तो ये थे हमारे साथ अति अनुभवी, अति प्रसिद्ध सुशील कुमार प्रसाद सर, जिन्होंने बहुत ही इंसाइटफुल बातें हमारे साथ करी. और आई एम श्योर इससे जो भी यंगस्टर्स, जूनियर्स, अपकमिंग क्रिकेटर्स, पेरेंट्स देख रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखेंगे उनके अनुभव से, काफ़ी वो लाभ उठाएंगे. दोस्तों, इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में. मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा. धन्यवाद.